Hello students. Hi, this is Pankaj Singh. Welcome to Trident's Chemistry, where we will learn topics of chemistry in conceptual and tricky ways. So, let's begin. हेलो स्टूडेंट्स सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बच्चों लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाउ in today's lecture we'll start with the atomic models because it's very simple to understand the things like अभी पहले हमें नहीं पता था कि atom में we thought that atom is very smallest part of matter फिर suddenly we started thinking no the smaller than atom that exists inside the atom, so we started looking for it, so we got the electron, proton and neutron. Now we are curious to know how will be the structure of atom kaisa dikhta hoga, what could be its model. So the first atom that was made by was known as Thomson, Sir J.J. Thomson. So the model known as Thomson model of atom. You all know that what is Thomson model of an atom? It is also called as plum pudding cake model or watermelon model. Correct? So it's like अगर मैं इसको draw करता हूँ तो हमारा model of atom कैसा दिख रहा होगा? Like this. ये हमारा watermelon है और उसके अंदर कुछ electrons जो हैं वो embedded form में है ऐसे कहीं कहीं पे. This is how our model of atom looks like. Which model? Thomson model of atom. Correct? And this was done in approximately 1904. This model came into 1904. So according to this model, what he said, positively charged proton is uniformly distributed throughout the body. Correct. Secondly, electrons are embedded. Electrons are embedded into the atom. It's like stick, like आपने पता है रेजिन्स, आपने केक खाया हो अपना पुडिंग के उसमें आपको पता है रेजिन स्टिक किया गया होता है. तो एक तरह से इन्होंने इसको क्या बना दिया, स्टेशनरी मॉडल और स्टैटिक मॉडल कि भाई यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है. और जो ड्रॉबैक था अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग नॉट अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू अस, ही सेड atom is electrically neutral, and you all know how the atoms could be electrically neutral. जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो सकते. करेक्ट? Correct. So this model does not explain the stability of atom. Correct. और हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो वो एक जगह पे कैसे रुक सकता है? It will be moving throughout the structure of atom. Whatever the structure of atom, it should be in moving condition because we know that electron is a charged particle. So to overcome with all this drawback, we came up with the new model of atom. You all know that. Rutherford model of atom. Very nice experiment. और इसको हम क्या बोलते हैं along with this Rutherford scattering experiment. Just think about it.
what could be the model? Yes. How can we imagine this model? चलो एक और नाम दे देते हैं इसको हम बना देते हैं planetary model of atom. You'll come to know why it is called as planetary model of atom. Okay, fine. Now, what he did during this scattering experiment? First of all, he took the gold foil. First of all, I took the gold foil like this. Suppose if I'm imaging of this much of height, and then he had a long, large screen, zinc sulfide screen behind it, like this. Okay. On the left hand side, he had the place from where alpha particle is coming, and then he kept the slit in between. Slit is the apparatus out of which only the straight radiation will come out. Only the straight radiation will come out. यहाँ पे क्या था बच्चों? बस totally like alpha particle यहाँ पे, यहाँ से alpha particle निकलेगा बाहर. Okay, यहाँ से alpha particle बाहर निकलेगा like this. Just a second, let me make it more clear. This is known as slit, gold foil. ठीक है, I'll mention the thickness also 0.00004. तो यार देखो 40 है और 4 लिख देने का फिर सिंपल से सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखता हूं मैं क्योंकि यहाँ पे मुझे रेडिएशंस दिखाने हैं जो स्ट्राइक होके गए थे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ गोल्ड फॉइल 0.00004 सेंटीमीटर. ओके, 4 times 0 बच्चों एंड 4 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड नाउ दिस? ओके, नाउ अब इसमें से जो रेडिएशन आ रहा था यहां से, it will come in the straight format. It will come into the straight format like this. ठीक है, अब बहुत सारे रेडिएशन जो थे वो आने के बाद थोड़े से शिफ्ट हो गए, फिर कुछ रेडिएशन ऐसे भी हो गए, कुछ रेडिएशन यहाँ से आने के बाद फिर ऐसे टर्न आउट हुए. लाइक आई एम जस्ट प्लेसिंग द पॉइंट. कुछ रेडिएशन आए और ऐसे शिफ्ट हो गए, कुछ रेडिएशन आने के बाद यहाँ से ऐसे टर्न आउट हो गए, और उसमें से कुछ रेडिएशन ऐसे भी थे जो स्ट्रेट तो आए, राइट, इस तरह से आया और इस तरह वापस चले गए एट लाइक 180 डिग्री. मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस था, मैं इसको 60 डिग्री बोल सकता हूँ, और इसको 90 डिग्री बोल सकता हूँ, इसको 120 डिग्री बोल सकता हूँ, इसको 180 डिग्री बोल सकता हूँ. तो क्वेश्चन आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यूज किया गया था बम्बार्डमेंट के लिए, मतलब helium nucleus. You should know this. This is totally positively charged particle, not having a single electron. It does not have it does not contain any electron. It does not contain any electron. Understood everyone? It does not contain any electron. So what was his observation? One more important thing, this is जिंक सल्फाइड स्क्रीन. तो अगर इस पे कुछ आएगा तो इट विल ग्लो. तो बेसिकली यहाँ पे ग्लो हो रहा था बच्चों. ठीक है, ये यहाँ तक इलोंगेटेड था तो यहाँ पे भी ग्लो होगा. ठीक है, तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास straight through gold foil without any deflection.
मतलब किसी भी डिफ्लेक्शन फटाफट पास हो गया. Then second observation, some of alpha particle were deflected through the small angle. We can call it as this small angle like 60°, right? Then very few alpha particles, very few alpha particles are deflected back more than 90°, like say we can say 120°. Okay, then what we can call it as, like after this Rutherford, like he was very excited because starting में जब 10,000 radiation pass out हो गए without any deflections, he was little bit like conscious, अरे कैसे होगा, क्या हो रहा है. Suddenly he saw some radiations are deflecting with a small angle, then he saw with the 90°, then he saw with the 120°. He got very happy. Now he was knowing that something is there inside which is deflecting this radiation. Now suddenly what happened, approximately few, very few alpha particle, very few alpha particles were deflected or bounced back at 100, I'm sorry, at 180 degrees Celsius. What does it mean? Radiation bounced back. It means something was here, to which it got strited and came back in the reverse direction. So after watching all this observation, what could be its conclusion? अब conclusion क्या निकाल सकते हैं वो? Conclusion वो क्या निकाल सकते हैं after this? कि most of alpha particles were undeflected. Show what show? Shows most part of atom is empty space. Yes. Second point what we can make, कि those alpha particles which deflected through small angle must what? Must have came closer to positively charged body inside the atom. Yes, yes or no? And third, what we can expect now? Yes, the last one, approximately we can say 1 in 20,000, 1 in 20,000 deflected at 180 degree, 180 degree must have indicated the volume occupied this heavy positively charged body. Like you can say when electrons are deflected, one must have touched न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस आपको पता है ये सेंटर, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया था, करेक्ट. तो इसका मतलब कुछ तो है एट सेंटर पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल इज प्रेजेंट. तो जरा अगर हम इसको इमेजिन करते हैं तो ये कैसे हुआ था? Approximately you can consider like this.
मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, हमारा प्लेट जो है, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स अरेंज थे। अगर मैं इसको थोड़ा अलग कलर में लूं, ऐसे, मतलब ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, स्टिल यू हैव टू गेट दिस इन द राइट वे। ओके, अब वो जो रेडिएशंस थे बेटा, वो अब मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में मैंने हर एक एटम के सेंटर पे बता दिया, सेंटर पे कुछ तो है, एवरी एटम हैज समथिंग एट इट्स सेंटर, ठीक है। या अगर मैं इसको हटा दूं पूरा, और मैं सिर्फ एक एटम की बात करूं जिसमें से वो पास हो रहा है, जिसमें से वो पास हो रहा है, तो हम एक बड़ा वाला एटम लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक सेंटर भी रखते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। और हम क्या बोल सकते हैं, जो रेडिएशंस आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, इस तरीके से, लाइक यहाँ से पास हो रहे हैं, यहाँ से पास हो रहे हैं, यहाँ से पास हो रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, ठीक है। एंड सडनली a radiation came very closer to this center and got deflected, then to the more closer got deflected, and when it came and struck this, it got bounced back. This is what how we have to get this. So after understanding the conclusion part, we'll go for the postulates of Rutherford model. So what could be the postulate, बच्चों? Yes. An atom is hollow, empty space, right? What we can say? Volume of nucleus is very small as compared to the volume of atom. Just imagine स्टेडियम और स्टेडियम के बीच में एक निडल रख दो, तो निडल उसका न्यूक्लियस हो गया, स्टेडियम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम हो गया। ओके, तो याद रखना कि जो साइज ऑफ एटम है, इट इज 10⁵ times greater than that of nucleus. Understood everyone? Yes. Then whole mass of an atom is concentrated at the center, known as nucleus. So we got the nucleus word here. Corrected? Corrected? Understood now? Okay. And very important, electrons equal in number net to the nuclear positive charge revolve around the nucleus with the fast speed, or the atom contain equal number of electron and proton. Correct? Then in the nucleus, neutrons and protons are present, also known as nucleons. जैसे न्यूक्लियन में जैसे कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो टोटल ऐड कर दोगे तो उसको हम न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन revolve
around, sorry, it's not G, it's D. Nucleus, electron revolve around the nucleus in certain circular pattern. Okay, so this was the postulates of the Rutherford model. अब सिंपल सी बात, अब उन्होंने मेंशन कर दिया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बट उन्होंने ये नहीं बताया इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. तो चार्ज पार्टिकल अगर मूव होगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी अगर रेडिएट करेगा तो कुछ समय बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अगर हम इसका ड्रॉबैक स्टडी करते हैं, इफ वी आर स्टडिंग द ड्रॉबैक्स, तो व्हाट वी कैन से, he did not explain what the exact position of electron, right? Second, हमें पता है electron is a charged particle, तो after as a result of this moving electron will come closer, like we know that electron is charged particle, so after moving it will radiate energy or release energy and will come more closer and closer to what, nucleus, right? In spiral way and finally fall into nucleus. अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इस तरीके से होगा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, फिर धीरे धीरे स्पाइरल फॉर्म में आके कहाँ में गिर जाएगा बच्चों, न्यूक्लियस में गिर जाएगा. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ. दिस इज हाउ इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. और कैलकुलेटेड टाइम के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड में ही वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इतना फास्ट रोटेट करता है. बट वी नो दैट द एटम इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन कि दिस वाज द रियल ड्रॉबैक्स. सो इनके जो करेक्शंस थे दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स atomic model. That was explained by Bohr's atomic model. But before the Bohr's atomic model, we learn something very important, which is known as atomic terms. What are they? Like, they are atomic number, that is represented by Z, then atomic mass number, that is represented by A, then the next term we'll learn is very important, isotopes, then we'll also learn isobars, we'll also learn isotones, okay. Then we'll also learn electronic spaces. These are the fundamental part. Like atomic terms में ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, okay. और एक और एक्स्ट्रा है बट इंपॉर्टेंट है, isostars. Okay, now in the next lecture we'll start with the atomic terms. Till then, just
try to understand models, Rutherford model and Thomson model of an atom. And next lecture, after completing the atomic terms, we'll move forward for the topic, which is Bohr's atomic model. Okay, everyone. Thank you.